साइंस 1 लेसन 5 हीट। अभी हीट लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का सब आंसर्स जो है क्वेश्चंस का आंसर वो इस वीडियो में है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स एंड री राइट द सेंटेंस। फर्स्ट वन ए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स डैश। तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। Second one, that is B, if objects of equal masses are given equal heat, their final temperature will be different. This is due to difference in their dash. तो आंसर क्या आएगा? specific heat capacity. Third one, that is C, during transformation of liquid phase to solid phase, the latent heat is dash. तो आंसर क्या है? released. Next, question number 2, Observe the following graph. Considering the change in volume of water as its temperature is raised from 0 degree Celsius, discuss the difference in the behavior of water and other substances. What is the behavior of water called? तो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम दिया था, ग्राफ जो दिया था, इसे ऑब्जर्व करके ये क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled, it contracts. Second point, water, however, shows a special and exceptional behavior. Third point, if we heat water from 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degree Celsius, its volume is minimum due to contraction. Fourth point, if the water is heated further, it expands and its volume increases. Fifth point, the behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 64 में ये मिल जाएगा और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? How will you prove experimentally that different substances have different specific heat capacities? फर्स्ट क्वेश्चन उन लोग ने क्या पूछा था? व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसका आंसर रहेगा फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of that object. Next question पूछा था, how will you prove experimentally that different substances have different specific heat capacities? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है? मटेरियल ए, a tray with thick layer of wax, solid spheres of iron, lead and copper of equal mass, burner or spirit lamp, large beaker. Procedure, first point, take 3 spheres of iron, copper, lead of equal mass. Second point, put all the 3 spheres in boiling water in the beaker for some time. Third point, take the 3 spheres out of the water. All the spheres will be at temperature 100 degrees Celsius. Put them immediately on the thick slab of wax. Fourth point, note the depth that each of the sphere goes into the wax. The sphere which absorbs more heat from water will give more heat to wax. More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes the deepest into the wax, lead sphere goes the least, and copper sphere goes to intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the 3 spheres have absorbed different amount of heat. This means that the property determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the 3 spheres. This property is called the specific heat capacity. और ये नोट्स के साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये जो डायग्राम और जो भी ये क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 68, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, while deciding the unit for heat, which temperature interval is chosen and why? Answer is what? If we heat
1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat. Second point, therefore, while deciding the unit for heat, the temperature interval is chosen is 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का ये दिया है ग्राफ, जिसे ऑब्जर्व करके यू हैव टू राइट द आंसर। द फर्स्ट पॉइंट क्या है, द गिवन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ shows the behavior of water when heated continuously and uniformly. Second point, the temperature of the mixture remains constant at 0 degrees Celsius till all the ice melts, as shown by the line AB. तो ये है line AB which I have not written over here. So this is AB, यानी यहाँ से 0 से लेके 4 डिग्री तक है, विच इज़ शोन बाय द लाइन ए बी। दिस टेम्परेचर इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो दिस इज़ लाइन ए बी जो बताता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। ऑन फर्दर हीटिंग द टेम्परेचर राइसेस स्टेडली फ्रॉम 0 degree Celsius to 100 degrees Celsius as shown by line BC. So this is shown by line BC. तो ये है लाइन BC। तो लाइन BC क्या बताता है, जब भी फर्दर हीट करता है तो टेम्परेचर कैसा राइज होता है, फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट्स At 100 degrees Celsius, water starts converting into steam. This temperature is the boiling point of water. The temperature of water remains constant at 100 degrees Celsius till all the water converts into steam. This is shown by the line CD. तो ये line CD indicate करता है कि at 100 degree Celsius में पानी जो है वो liquid से vapor में convert होता है, और तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। और ये सब पॉइंट जो है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 में मिल जाएगा। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए, what is the role of anomalous behavior of water in preserving aquatic life in region of cold climate? तो आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इन कोल्ड क्लाइमेट temperature of water in ponds and lakes starts falling. Second point, as the temperature decreases, water contracts, hence density of water increases and it goes down, and warm water from below rises up. This process continues till the temperature of all the water in the lake falls to 4 degrees Celsius. Third point, water due to its anomalous behavior possesses maximum density at 4 degrees Celsius. Fourth point, if the temperature of water on surface cools further and falls below 4 degrees Celsius, it starts expanding instead of contracting. Therefore, its density decreases and remains at the surface, and the temperature of the surface water continues to fall to 0 degrees Celsius. Fifth point, hence the water on the surface gets converted into ice. Sixth point, ice being poor conductor of heat blocks the further heat exchange between atmosphere and water in the pond. Last point, seventh point, has the water below the layer of the ice remains at 4 degrees Celsius, thus preserving fish and other aquatic animals and plants in regions of cold climate. Second question, that is B, how can you relate the formation of water droplets on the outer surface of a bottle taken out of a refrigerator with formation of dew? तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, at a given temperature there is a limit on how much water vapor the given volume of air can hold. Second point, the lower the temperature, lower is the capacity of air to hold water vapor. Third point, the temperature of the bottle kept in a refrigerator is lower than room temperature. Hence, when the bottle is taken out of the refrigerator, the temperature of the air surrounding the bottle is lowered. Fourth point, therefore, the capacity of the air to hold water vapor becomes less.
Hence, the excess water vapor condenses to form water droplets on the outer surface of the bottle. कोई कोई पॉइंट्स जो है पेज नंबर 66 में मिल जाएगा और उसको समझ के बाकी सब खुद से लिखना है. Third question C. In cold regions in winter, the rocks crack due to the anomalous expansion of water. Answer. First point. As temperature in cold climate decreases below 4 degrees Celsius, water accumulated in cracks of rocks starts expanding instead of contracting. Second point. Between 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, volume of water increases due to anomalous behavior of water. Third point. At the same time, rocks undergo contraction. Fourth point. Hence, in cold region in winter, the rocks crack due to the anomalous expansion of water. Seventh question. Answer the following. उसका first one A क्या है? What is meant by latent heat? How will the state of matter transforms if latent heat is given off? तो first question का answer what is meant by latent heat का क्या है? First point, the heat energy required to change substance from one state to another at constant temperature is called as latent heat of substance. Second point, that is how will the state of matter transform if latent heat is given off? इसका आंसर क्या है? When latent heat is given off, the bonding between the atoms or molecules of a substance strengthens, causing transformation from one state to another, that is from gaseous state to liquid state or liquid state to solid state. Second question B. Which principle is used to measure the specific heat capacity of a substance? Answer. First point. Principle of heat exchange is used to measure the specific heat capacity of a substance. Second point. If the system of both the objects, that is a hot object and the cold object, is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation, we get the following principle. Heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. नेक्स्ट C. Explain the role of latent heat in the change of state of a substance. Answer. First point. The heat energy required to change substance from one state to another at constant temperature is called latent heat of a substance. Second point. When latent heat is supplied to a substance, it is used for weakening the bonds between atoms or molecules and solid changes into liquid state. Third point, similarly, when liquid substance is provided with latent heat of vaporization, it changes into gaseous state. Fourth point, similarly, when latent heat is given off from a substance, it strengthens the bond between the atoms or molecules, causing change of state of substance. Fifth point, when liquid substance gives off latent heat of fusion, bonds between atoms or molecules grow stronger, bringing them closer, and liquid changes into solid. Sixth point, similarly, when a gaseous substance gives off latent heat of vaporization, it changes into liquid. So, ये answer you'll understand better from this diagram. Solid, जब भी latent heat of fusion उसको supply किया जाता है, it gets converted into liquid. और liquid, when latent heat of vaporization उसको supply किया जाता है तो it become gaseous. उसी तरह gaseous में से latent heat of vaporization give off करता है तो गैस जो है वो liquid में convert होता है. उसी तरह latent heat of fusion जब given off है, when it gives it off तो liquid gets converted into solid. ये जो आंसर है पेज नंबर 63 में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का. Fourth question, that is D. On what basis and how will you determine whether air is saturated or not? Answer. First point, the relative humidity at dew point is 100%. Second point, if the relative humidity is 100%, air is saturated with water vapor. Third point, when air is saturated with vapor, excess of vapor condenses on the surface of the object in the form of water droplet. Fourth point, presence of water droplets confirms that air is saturated with water vapor. Fifth point,
If the relative humidity is less than 100%, air is not saturated with water vapor. Now 8th question, read the following paragraph and answer the questions. और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था और सितंबर 21 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, 3 मार्क के लिए पूछा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 क्वेश्चंस दिए हैं बिलो दी पैराग्राफ, और ये 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे थे। नाउ पैराग्राफ इधर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, यू कैन सी ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से लेके यहाँ तक पैरा है और इसके नीचे 4 क्वेश्चंस हैं। और एग्ज़ाम में सिर्फ 4 नहीं पूछा था, सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछा था फॉर 3 मार्क्स। और ये जो पैरा है वो पेज नंबर 69 में है, ये रहा पेज नंबर 69 में ये पैराग्राफ दिया है, स्टार्टिंग से लेके इफ़ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट ऑब्जेक्ट्स से लेके यहाँ तक नो एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और कम इनटू द बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये पैरा दिया था, मार्च 2022 में भी यही पैरा दिया था, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विच वर गिवन बिलो। लेकिन सितंबर 2021 में पैराग्राफ नहीं दिया था, सिर्फ डायग्राम दिया था, डायग्राम दे के समझ के यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये मार्च 2022 में भी पूछा था और सितंबर 2021 में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो आंसर है दिस प्रोसेस शोज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये सितंबर 21 में पूछा था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली, ये मार्च 2022 में पूछा था। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली। तो उसका आंसर है इनसाइड द हीट रेजिस्टेंट बॉक्स द हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इज स्टेटेड एज व्हाट, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। सो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मार्च 2022 में भी पूछा था और सितंबर 21 में भी पूछा था। तो दिस पैराग्राफ अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए पूछा था, यानी 3 ही क्वेश्चंस पूछा था, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है लेकिन इसमें से 3 ही क्वेश्चन पूछा था। और ये मार्च 2022 में भी पूछा था और सितंबर 2021 में भी पूछा था। मार्च 2022 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 पूछा था और सितंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 पूछा था। Extra questions asked in the board exam from lesson 5, that is science 1, heat. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क रहता है। फर्स्ट वन, वाटर एक्सपांड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए 0 दिया है, ऑप्शन बी 4 दिया है, ऑप्शन सी 5 दिया है, ऑप्शन डी 12 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 4, तो ब्लैंक में आएगा 4। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सेकेंड क्वेश्चन, the vapor content in the air is measured using physical quantity called dash. Option A absolute humidity, option B relative humidity, option C dew point और option D humidity है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये ब्लैंक में क्या आएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। थर्ड वन, the phenomena in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called a dash. Option A boiling point, option B regelation, option C freezing point, option D melting point। the correct answer क्या है, option B regelation। तो blank में क्या आएगा, regelation। Question 2, match the following। कॉलम ए में सिर्फ एक ही दिया है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और कॉलम बी में 3 दिया है, ए 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस।
तो आंसर में क्या आएगा, कॉलम ए एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कॉलम बी में करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों में से करेक्ट कौन सा है, बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये 1 मार्क के लिए पूछा था और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये फिगर दिया था, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ए क्या दिया है, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो आंसर क्या रहेगा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, एट what temperature this process takes place। तो आंसर आएगा, this process takes place in the interval 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो फिगर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 में मिल जाएगा और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 65 में मिल जाएगा। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, टोटल 2 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स apparatus। ये 2 मार्क के लिए पूछा था एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 65, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 में ये दिया है। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ड्रॉ करने के बाद लेबल भी करना है। ये थर्मामीटर है, ये भी थर्मामीटर है, ये T2 है और ये T1 है। ये 0 डिग्री सेल्सियस में है और ये 4 डिग्री सेल्सियस में है और ये क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स SI यूनिट। ये 2 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसका आंसर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of that object। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट क्या पूछा था, राइट इट्स SI यूनिट। तो उसका आंसर क्या आएगा, द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल्स पर डिग्री सेल्सियस kg। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में मिल जाएगा और ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था।